A very happy evening, all of you. A very good evening. Hi ma'am, how are you? I'm good. How are you all? I'm doing well. Wonderful. Okay, let us talk about the previous practice we were doing. You see, as I told you, if you remember, after 12th, we are working on visualization and working on manifestation. So therefore, all the activities are now towards manifesting, because we have already thought about, noticed, and seen what is good in our life. And now we are manifesting bigger, higher, stronger, whatever you put. Okay, today's practice is magic and miracles in health. Before we move further, anybody would like to share about the relationship activity which we did last Saturday? I mean, on the Saturday we did this activity. Has anybody done it? Yes ma'am. Ah, very good. How did you feel? Yeah, what did you write about it? Did you remember what to write? I mean, what positives were you able to write? Yeah, I was able to write 10 Very positives good. about the person. Yeah. Very good. And after that, how did you feel? Yeah, I felt like it was, I mean, I couldn't even remember why, we had fallen apart. But Ah, yeah, I felt, yeah, okay. Uh, at least you feel good about the person. You feel, yeah, yes. you can, take I mean, should the opportunity come, Huh? uh, be able to take the you'll be able to take the relationship forward and not Very block it. good. Very good. So, I mean, so the feeling changed from what it was to now what it is. I think from neutral it became positive. Very good. Actually, at times it is not even neutral. It tilts towards not a very good feeling. You may call it negative, you may call it whatever. But this kind of relationship, I mean, this kind of feeling, it is not neutral. Isn't it, Madhuji? Okay, with this particular relationship, because we are very close friends and we had done so many things together, and and it was not like we had a major fight or fall off. So I think it was more of a, it was not a, I would certainly say it was not of a negative, but Okay. we were just not talking. But I then after writing this, I felt no. I mean, when I have had such a good, when Person we in your have life. times, yeah, or good relationship, I would say, why there's such few relationships like that. And I felt very grateful that all I had all that thing. So I felt no, this is something I should take forward. Wow. I may want to even like maybe after some time I want to say no, I'll make the first move. Great. Wonderful. मनीषा जी, आपके लिए कैसी थी फीलिंग? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग माय डियर। मैम मैंने एक्टिविटी की तो मेरे लिए ना फीलिंग, क्योंकि मैं इतने दिन से लगातार कर ही रही हूँ सब, मैं कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं कर रही हूँ। तो जो वेरी काउंटर गुड। ब्लेसिंग्स है, तो मैं उसमें भी ना उस पर्सन के लिए रोज जितना भी वीकली ग्रेटफुल होती हूँ। एक लाइन मेरी रहती है, मेरे हस्बैंड के लिए था ये जो वाली एक्टिविटी थी। तो मैं उनमें रोज कुछ ना कुछ देखती हूँ। अच्छा, उन्होंने आज मेरी बेटी को ये शॉपिंग करा लाए, अच्छा आज उन्होंने मानवी को देख लिया था। तो वो काउंटर ब्लेसिंग से मैं रोज उनके बारे में कुछ ना कुछ लिख रही हूँ। तो वो सारी इकट्ठी करके 10 लिख ली मैंने। ये तो इसीलिए शॉर्टकट था। ये तो शॉर्टकट था। इसलिए था, हाँ मैंने तो ढूंढ रखी है, मतलब इतना है नहीं, तो। अभी आप वापस एक बार करना, जब भी आपको सहूलियत हो, जब भी आपको फुर्सत हो। अब आप उस वक्त कहते हैं ना, देखिए क्या है, ये तो रोज कुछ ऐसी चीज हो रही होती है कि आप उसको आपने लिख लिया और आपने उसमें से उठा लिया। ठीक है। अभी क्या है
कि हम जिस भी इंसान के साथ रह रहे हैं या जिसके लिए भी हम कर रहे हैं, उसके साथ हमने कुछ अच्छा टाइम जरूर स्पेंड किया हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो अब हम उस अच्छे टाइम को लिखेंगे, उस अच्छे टाइम में से हम क्या लेके आ रहे हैं वो लिखेंगे। ये वाला, अब ये तो आपने लिखा, वेरी गुड। ये मैंने लिखा है, और जैसे मुझे जो याद था कि जैसे मेरे को हमेशा जो था हाँ कि मुझे हाँ वो हाँ, ट्रिप बस करना है, बस, तो उन्होंने मुझे कराया, तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हाँ वो सब हाँ, मैंने और वो मैं वंडरफुल, डेली बेसिस पे उनको उनके लिए एक ग्रेट वो लिखती हूँ, एक थैंक यू। तो इसलिए मुझे वो बहुत ज्यादा अलग फील नहीं हुआ, लेकिन मैं ओवरऑल हैप्पी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, हमको अपनी फीलिंग देखते आना है अब। आई हैव टू लर्न टू सी कि मैं कौन सी फीलिंग में थी और मैं कौन सी हूं। अब ये सब क्यों करना है भाई? हो गई ना, अब क्या करना है? एक्चुअली जब भी हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो जो हमारी फीलिंग है ना, वो पॉजिटिव नहीं रहती है। तो हम उस नेगेटिव में जब चले जाएंगे तो हम हमारे लिए नेगेटिव बुला लेंगे। तो फिर हमारी फीलिंग्स तो बदल ही जाएंगी ना। फिर हम कौन सी वाली एनर्जी एमिट करेंगे? हम तो फिर लो एनर्जी एमिट करेंगे, उस हाई एनर्जी पर तो जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए अपने को किसी और के लिए नहीं करना है कि मुझे तो उस हायर एनर्जी पर ही एमिट करना है। अभी जैसे चलो मैं आपको बात में एक एग्जाम्पल भी दूंगी। वंडरफुल, बहुत अच्छा, कम से कम आप लोगों ने करी। आई एम सो हैप्पी यू डिड दैट। उमेश जी, कर पाए थे क्या? जी मिस कर पाया, लेकिन वेरी सिर्फ गुड, एक ही सेंटेंस लिख पाया, लेकिन वो कोई बात बहुत ही नहीं। बड़ा हेल्पफुल था कि उन्होंने, मैं जहाँ जॉब पे था तो मेरा घर का हो नहीं रहा था, और हो गया तो कुछ भी नहीं था, फर्नीचर, इवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना ट्यूबलाइट, फैन, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने भाग दौड़ करके इलेक्ट्रिशियन सारा चीज बुला के रिसोर्सेस लगा के बहुत बढ़िया कर दिया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो मैंने हाँ, लिख दिया कि हाँ, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल ललित, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मेरे लिए इतना सारा किया, जो शायद ऑफ कोर्स ही वाज माय असिस्टेंट, बट फिर भी मैं उनकी ड्यूटी ना समझ के मैंने बोला आपने मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प की है, इवन दो इट मे बी पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, बट मैं ये वो नहीं समझ रहा हूँ, बट इट्स अ ह्यूमन टू ह्यूमन, एक आपने मुझे हेल्प की है, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। अभी जब आप इन लोगों से बात कर रहे थे, दूसरे पार्टिसिपेंट, तभी मुझे दूसरी भी बात याद आई। तो हाँ, नाउ सेकंड पॉइंट इज ऑल आल्सो ऑन द वे, कि ही हैज हेल्प मी ऑन मेडिकल ग्राउंड आल्सो ट्वाइस। सो जैसे ये बात करते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एज आई ऑलरेडी शेयर, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस फॉर अस आल्सो, और हमको भी yeah, याद आ जाता है कि यस, व्हाट वी हैव टू थिंक, एंड टू स्मॉल थिंग जो मुझे चाहिए था, वो मैं सोचता था कि मुझे ये चाहिए, लेट इट बी पूजा मटेरियल, तो मुझे मिल नहीं रहा था, आइदर कॉस्टली या नॉट अवेलेबल। हाँ, तो वो दिखने लगा कि अरे ये तो मेरे सामने पड़ा है, व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इट। एंड हाँ, जो दूसरे लोग हैं वो भी बोलते हैं यू कैन यूज दिस मटेरियल, जब तक आपको मिलता नहीं है। तो मेरा काम हो गया, जो पहले सामने होता है वो भी नहीं दिखता था, अभी वो दिखने लगा है। बट wow, स्लोली स्लोली इट इज इम्प्रूविंग, नॉट 100%, बट वो भी हो जाएगा। और लास्ट वीक मुझे कुछ 4 डिशेस खाने का मन हुआ था, तो मैंने अपने थॉट में यूनिवर्स को बोल दिया कि भाई मुझे ये चीज 4 चीज खानी है। जहां मैं रहता हूँ मैंने किसी को नहीं बोला, ना अपनी वाइफ को, ना पीजी में, कहीं पे भी, बट oh, ऑटोमेटिकली उन्होंने 4 में से 3 डिश बना दी, wow, एंड आई गॉट इट, आई डोंट नो हाउ। तो मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स पे कि भाई यू आर डूइंग गुड थिंग फॉर मी। बस, तो अजू एक डिश पेंडिंग है, वो भी शायद हो जाएगी, लेकिन हाँ, एक ही जगह पे मैं मार खाता हूँ, जॉब के इसमें, के जॉब आई एम वेरी नियर टू इट, बट आई एम वेटिंग फॉर अ गवर्नमेंट अप्रूवल एंड पेपर्स, जिसको वर्क परमिट हम कहते हैं, आई एम वेटिंग फॉर दैट। जैसे ही वो मेरे हाथ में आ गया, आई वुड बी ज्वाइनिंग इट। तो वहां पे मैं थोड़ा सा पीछे रह जाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट आई कीप ऑन ट्राइंग, आई से यूनिवर्स कि I have got a good job and I have joined it and I am working it, और गाड़ी अपनी चल इंश्योर, पड़ेगी। हाँ, इंश्योर। उस वक्त अभी जैसे अब अपन बोलो ना, नहीं हो रहा है अभी, जैसे जी मैंने बहुत सारी डिजायर्स लिखी। ये मैं एक जी जनरल बात कह रही हूँ, नथिंग टू डू विद जी उमेश जी। मैंने बहुत सारी डिजायर्स लिखी, ठीक है? तो सपोज उसमें से एक डिजायर थी कि भाई मेरे को एक उस तरह की पर्टिकुलर ड्रेस है जो नहीं मिल रही थी और वो मुझे मिल गई, ठीक है? एक ही सपोज डिजायर थी। और एक मेरी डिजायर ऐसी थी कि मुझे एक नई गाड़ी लेनी है।
अब आप बोलोगे मेरे को ड्रेस तो मिल गई, मेरी डिजायर तो पूरी हो गई, गाड़ी नहीं मिली है मेरे को अभी, तो जो छोटी चीज थी वो हो गई। ऐसा मैंने आपसे क्या कहा था, छोटी छोटी चीजें आपकी जो बड़ी वाली गिफ्ट है ना उसका रास्ता बनाती है। तो जब आपको छोटी Okay. गिफ्ट मिली आप कितने खुश हुए? बहुत बहुत। तो आपकी उस खुशी में आप अपनी आस को और बढ़ाइए और उसको लाइए। फॉर एग्जाम्पल आपको यदि वो मेरा वो ओलंपिक्स का विनर है जो जी सिल्वर मेडल वाला जी है, तो जी अब उसने अपनी फीलिंग्स ही तो बिगाड़ दी, तो आपको क्या लगता है अगले जी, साल उसको गोल्ड आएगा क्या? मुश्किल है। ऐसा होता जी तो हर साल जिसको सिल्वर आता है वो गोल्ड में जरूर होता, ओके वो होता ही होता। बट जी वो मार कहाँ खाता है? वो उस फीलिंग की वजह से मार खाता है। अभी मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा तो अच्छा नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब मैं उस जो भी है उसकी जो ग्रैटिट्यूड की जो मेरी फीलिंग होनी चाहिए ऊंची वाली, वो का है, राइट? तो खेल जी सारी हमारी इस फीलिंग्स का है। जी, बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग, तो वी वी शुड बी हैव सो हैप्पी के। मच, नो नो, वी यस हैव अ जी लॉट। अभी ओके आप जब जैसे जैसे देख रहे हैं ना, अभी जी देखिए उमेश जी, आपके पास जॉब की कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है बस, जी ठीक है? जी जी आप ट्रू देखिएगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी जॉब लेने के लिए राजी है, मिल जाए जी जी ट्रू तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं। ट्रू तो वो खुशी वाली मेरी फीलिंग कि हाँ मेरे पास है, आई एम सो ग्रेटफुल, जी तो ये फीलिंग हमको बिल्कुल ऊंचा ले जाएगी। द फीलिंग्स का ओके बहुत बहुत महत्व है। ओके चलते हैं आगे और बात करते हैं। जी ये जी, सब थैंक यू कौन मिस। पढ़ना चाहेगा आज? मैम मुझे एक बात पूछना था। जी बोलिए। हाँ, कि जब मैंने ये फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश किया ना, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे मेरे जितने भी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप मुझे सबके बारे में लिखना चाहिए, तो देन आई विल नॉट फील रियली नेगेटिव अबाउट मोस्ट ऑफ माय रिलेशनशिप। Yeah, absolutely, that is what I told you, you can do it every day. if क्या होता है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनके साथ मेरा बहुत नेगेटिव है, क्या मैं तो उनको उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ सपोज, हाँ तो अब मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिखूंगी, तो मैं एक एक कोशिश करूंगी कि एक लिख लूं, वो भी जो लोग बोलते हैं उनके लिए। मेरे पास तो उनके लिए अच्छा कुछ भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि ये अच्छा है उनमें, या कभी हमारा जब अच्छा रिलेशनशिप था उसमें से कुछ तो 100 में से 100 में से 100 चीजें तो किसी इंसान ने खराब नहीं करी होंगी, करी क्या? हो सकता है क्या कि फिर मेरे हम साथ किसी किसी ने 100 में से 100 चीजें मेरी खराब थी? नॉट पॉसिबल। तो जो एक अच्छी थी, बेशक बहुत सिंपल थी, कोई बात नहीं है, मुझे करना क्या है, मुझे उनकी तारीफों के पुल नहीं बांधने हैं, मुझे अपने आप को उस फीलिंग में से निकालना है जिसकी वजह से मैं अपना अट्रैक्शन बंद कर दिया है। तो दूसरों की वजह से मैं क्यों अपना खराब, मतलब दुखी भी दूसरों ने दुखी भी मेरे को किया और मैं अब अपने आप को मैं दुखी करूं? राइट? ये वो वाला हिस्सा हो जाएगा कि मैंने तो आपको दुखी करा ही करा था, अब आप अपने आप को फिर दुखी कर रहे हो, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? Right? So therefore we have to come out of this feeling, which is very important. Okay, so who would like to read? Anybody would like to read? I can read. If there is no one available, I can read. Yeah. Then let them go Anybody ahead. else? I can also read if you want. Please चले, go ahead, sir. please go पढ़ने दे, ahead, sir. मधु जी को पढ़ने दीजिए, मधु जी को पढ़ने दीजिए। Okay. नहीं सर, पढ़िए, मैं तो 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ। Okay, ma'am. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. We all think, the nature, you talk of miracles, the nature is full of miracles.
कभी आप बैठ के देखिएगा, कभी आप बैठ के देखिएगा, 4 तरह के फूल को देख लीजिएगा। आप ज्यादा डिटेल में ही मत जाइएगा, वरना तो ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक मिरेकल है। हमारी जो ये बॉडी है, जो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है, आप देखिए जो सुपर कंप्यूटर है, उस सुपर कंप्यूटर को भी बनाने वाला ये ब्रेन है। आज ये कंप्यूटर एक साथ कितने काम कर लेता है, इसको बनाने वाला भी हमारा ही ब्रेन है। तो आप सोचो हमारी पावर क्या होगी। इट्स जस्ट दैट we are not using it, that is another altogether different story. But we means we human bodies are no less than miracles, rather are miracles. And do you remember when your children were young, or those who's got young children, just see, आप बच्चा कुछ बात नहीं करते, अपने आप लेटा रहता है, इधर पलटता है उधर पलटता है, अपने आप ही हंसता रहता है, उसको कोई जोक नहीं चाहिए, कोई टीवी नहीं चाहिए। When I'm talking about an infant or just few months old baby, or when they just learn to crawl, or when they just play with their own body. So, and they're so happy. I have never seen any child, I would feel कि यार आज इसको स्ट्रेस है, आज ये बड़ा डिप्रेशन में है, आज मेरा 3 महीने का बच्चा ना डिप्रेशन में आ गया है, बड़ी एंजाइटी हुई है उनको। ऐसा कभी नहीं होता। So what is our true nature? That is our true nature. But as we were growing, we kept on getting some or the other, ये सिर पे पड़ती रही, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है। और फिर हमारी लाइफ की दूसरी 10 तरह की पिक्चर है, and then we feel otherwise। आप देखिए एक बच्चे को, therefore no people they say you should not allow your inner child to grow up। हम सब के अंदर एक बच्चा है। आप देखिएगा जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और जब दोस्तों के साथ आप ठहाके लगाते हैं, आप देखो कैसी कैसी मस्ती करते हैं अपन, राइट? तो वो कहां से आती है हमारे अंदर इनर चाइल्ड। अब उस इनर चाइल्ड का बचपना कैसा था, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं which we are not talking right now। बट आप देखिएगा हमारा जो नेचर है वो है टू बी remain happy all the time, right? Let us read। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often. If ever, many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from the bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. You see, I was reading somewhere, like it was a research, and in that research, out of 100 people, 65 people, 65% people, they chose happiness over health। मतलब क्या, यदि मैं बहुत हेल्दी हूं, ठीक है, पर मेरे को खुशी नहीं है किसी चीज की, तो मेरी वो हेल्थ ज्यादा दिन चलेगी नहीं। Whereas if I am very happy, and along with that happiness, if I am very happy, although I might have few health issues or challenges, but then the life is beautiful, amazing. So to be happy is our birthright, and this happiness would give us perfect health, which again is our birthright. And then we talk of depression. It is such a common word. Every second person is talking about depression, anxiety, stress। मतलब अभी तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि मैंने तो आज तक ये सुना था कि वेल्थ मैनेजमेंट होता है, पेन मैनेजमेंट सुना था कभी कभी, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो कभी नहीं सुना था मैंने। तो वी नाउ हियर दिस वर्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट सो ऑफन कि मतलब क्या, एक बैंक में अकाउंट खुलवा के आना है जहां मुझे स्ट्रेस को रख के आना है, करना क्या है, हाउ डू आई मैनेज इट, स्ट्रेस आ कहां से रही है। Again, this is the thought to be pondered over।
Because we have become so materialistic, we have become so selfish. हमें थोड़ा सा कम मिलता है तो वही वाला ब्रॉन्ज मेडल वाला खुश है, सिल्वर वाला खुश नहीं है. थोड़ा सा भी कम मिला तो ना भाई. So now all these things would add into my. छोटे बच्चे को आजकल डिप्रेशन है. I was, because since I deal with all these elderly children, so I was hearing that these days these young kids, these small children, they are also depressed. There is anxiety in them. Just think, इस एज में ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं हो रहा है तो हम पेरेंट्स क्या नहीं दे पा रहे हैं उनको? We have to think about it. So if gratitude is there, that is the strongest emotion which will help us fight. We will not be in depression. We will never be depressed. We will never be stressed if we are in gratitude. Yes, dear. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website, www.thesecret.tv/stories. We all know, अभी हम लोगों ने घर पे बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर कुछ करते करते बच्चों को, हमको, all of us have experienced, कभी कट लग गया था, खूब सारा खून लग गया, और या किसी को कोई स्टिचेस आए. These are common things we come across, right? और वो अपने आप हील कैसे हो जाता है? आप देखिए, यदि अपने को यहाँ पर चाकू लग जाता है, आप उसको कुछ मत करिए, अपने आप में वो खुद ही हील हो जाता है. आपको कोई स्टिचेस नहीं लगाने पड़ते हैं, आपको उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना पड़ता है. मतलब क्या हुआ इसका? That this miraculous body is capable of healing itself. It is capable of healing itself. Then what makes it every time something new? Why does that healing not sustained? Because we are one day doing something, another day we are not. For example, today I am in gratitude about my body. I'm thanking my body. Next day I would abuse my body. No, so many times you hear, यार मैं तो पागल हो गई हूँ, यार मैं तो बहुत बुद्धू, मैंने आज ये कर दिया. Oh, I'm so stupid. आपने अपने आप को पता नहीं क्या 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 कह देते एक सेकंड में. तो भाई, जिसको भी गाली पड़ती है उसको अच्छा नहीं लगता है, तो बॉडी को भी अच्छा नहीं लगता इसको जब गाली पड़ती है, right? So gratitude would increase this healing power in us. This healing power is already there. Yes, sir. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. Yes, like if I'm working on the nutritious food, तो फिर तो जो इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं and they eat good food, I'm very sure. If somebody is very wealthy, would be eating something very good. ये तो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको खाने को अच्छे से नहीं मिलता है. तो फिर यदि ऐसा है तो उनकी बॉडी जल्दी हील क्यों नहीं हो जाती है जिनको बहुत अच्छा खाना मिलता है? Then in the hospitals we should not have rich people suffering from any disease. Their body should heal like that, because the nutrition is there, good care is there, they are in best of the hospitals where the medical assistance is best. तो फिर गरीब होना चाहिए वहां पे, अमीर नहीं होना चाहिए. That means इन सब के अलावा कुछ और भी जरूरी है. आप देखिए, the Google is full कि ऐसा खाना खाओ every time. अभी तो जैसे वीडियोस का जमाना है, every day you come across another video. Eat this, eat this, eat this. I was wondering the other day,
Now the human beings, like people, they're so confused. करना क्या है भाई? कल आज एक दिन खड़ा हो जाता है तो एक जना कहता है कि देख नाश्ते में कुछ मत खाना, दूसरे दिन दूसरा खड़ा हो जाता है कि अच्छा पोहा खा लेना, उपमा खा लेना, तीसरे दिन एक जना खड़ा हो जाता है कि भाई आपकी दादी नानी ने भी तो सब कुछ खाया ना, उन्होंने भी तो अच्छे से सरवाइव किया, आप ही के लिए प्रॉब्लम है कि सरवाइव करना, राइट और नॉट? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी जनरेशन, मेरी दादी नानी ने जो करा, and they survived and they had a good awesome life, should do that. Otherwise one day somebody is saying this, another day, so you also don't know what to do. So let us only stick to our gratitude. Every day fashion hai, roz nayi cheez aati hai, so let us stick to our gratitude and see how things are changing for us. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Yeah. Whenever we are sick, दिन भर में कितनी बार बोल देते हैं, सर प्लीज ये रुकेगा, कि दिन भर में हम कितनी बार बोल देते हैं, आई हैव स्टमक एक, ओ मेरे को सर्दी है. आप जितने लोगों से बात करेंगे, आज मेरे को सर्दी है, आज मेरे को सर्दी है. So what kind of, I'm not very happy telling about it, right? What kind of a feeling is associated with that negative feeling? So if I have spoken to 5 people or 10 people in that on that particular day, how many times I have revived myself and got into that negative feeling? Sardi hai, isn't it? So now I am having all, अच्छा आप करके देखिएगा, जब भी अपने को कुछ प्रॉब्लम होगी और आप उसके लिए सब बाजे बजा के सबको बोलिएगा, एक रत्ती भर भी चीज वो जहां है वहां से वो सरक जाए तो आप बोलिएगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा. Whereas यदि हम इतनी सारी ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइजेस करते हुए चले आ रहे हैं, हम कुछ भी कर लेंगे और नहीं तो रोज 10 चीजें लिख लेंगे, तो भी हमारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी. और अब सिंस हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, what are we going to do? Just be in gratitude for this health. Let us, if for like if I say सर्दी है, तो सर्दी है, उसके बाद भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपने सारे काम कर रही हूँ. सपोज इफ आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग आल्सो, आई एम कुकिंग आल्सो, और मुझे कभी किसी किटी भी जाना है तो भी सर्दी में तो गई हूँ. आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट स्टिल क्रिबिंग अबाउट इट कि आज ये है. So this will not give us good health. Believe me, dear friends. So the best way is, if something is wrong with the body on any particular day, just try to find out your feeling. No need to tell 10 people also about it कि आज मेरे को ये हो रहा है. Doctor is another person. I'm not saying not to tell the doctor, right? So to increase your good health, you have to leave your negative feelings. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Yeah. You see, so many times we put not only others, we give label to ourselves also. मेरे पर ना ये सूट नहीं करता है, मैं ये चीज पहनती हूँ तो मुझे मेरी बॉडी पे अच्छा नहीं लगता है. मतलब मैं अपनी बॉडी की वो नेगेटिव चीज कर रही हूँ, मतलब ये किसी और पे तो अच्छा लगता है, मेरे पर अच्छा नहीं लगता है. तो मैं ये गाली कह लो, ये गलत चीज कह लो, आप कुछ भी कह लो, ये किसको बोल रही हूँ मैं? अपने आप को ही तो बोल रही हूँ. अभी हेल्थ के नाम पे क्या सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही है? हेल्थ के नाम पे तो क्या सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस है मेरे पास? ठीक है, यदि if I look pretty, if I look beautiful and rest of my organs are not supporting me, what will I do of this beauty? Will I do something of this beauty? Or even if you talk of the
physical health. If I am very healthy, बात ही अलग है. So again, when we are talking about our health, and if we are complaining that I see, like, oh, when you see the सबसे ज़्यादा problem तो कहाँ है? When you see Bollywood heroines, the Bollywood actors, अरे साहब, उनकी रोजी रोटी उस पे चलती है, उनका सारा दिन उसी के ऊपर जाता है, फिर उसके बाद वो उनकी मेकअप है, उनकी फोटोग्राफी, उनकी क्या तो भी है. Why are we comparing? और कुछ लोग तो माशाल्लाह वो अपनी वाइफ से भी कहते हैं कि this heroine looks so pretty, why don't you imitate her? इसके जैसे क्यों नहीं पहनते, इसके जैसे बाल क्यों नहीं बनाते हैं? That means we are not respecting the person, the body, whatever we have. There are people in the hospitals. Once in a while, we should visit the hospitals also. जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और जब हम तरह तरह के लोग देखते हैं ना वहां पे, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, then we realize, and then वो gratitude निकलता है अपनी बॉडी के लिए. Oh my God, I'm so grateful. आप हॉस्पिटल में जाके देखिएगा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं, पर दुनिया भर की चीजें हैं. तो अब because they have not, then we don't have gratitude for our good health. So the law of attraction is, if I don't have, I'll ruin myself. So therefore, whoever does not have gratitude for their health and body, even what he or she has will be taken from him or her. Please never forget these lines. And whosoever has gratitude for their health and their body will be given more. And he or she will have an abundance of health to their body. So stop comparing, stop complaining about our body. वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए, gratitude करना चाहिए. Whoever Right? does, Yes, sir. whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. Yes, sir, I read this. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Yeah, we all understand. When when we are sick, it is, the feelings are altogether different. There's discomfort, dis-ease. But then, if we want to change it, there are two choices. If we can just remain in that dis-ease, not comfortable, and keep cribbing and complaining about it, or we can just try with little gratitude also, that will start changing the things for us. Today's practice, magic and miracles in health is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. Step 1, health you have received, past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and about adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Yes, we have to first think about our past. How was our health? We used to run, we used to play, we used to do anything and everything, right? Right now also we do many things, but then the things are different. How are things, like we all have children at home, how do they run around? How are they happy? When they just talk to each other and they're so happy. They just enjoy and they can laugh at anything and everything. The smile, it's always if you will see children, most of the time they are smiling. Just they grow up a little bit, that the smile vanishes.
आप देखिए जब आप बड़े हो रहे थे, जब मुझे तो अभी तक भी नहीं याद है, जब मैं बड़ी हो रही थी या अभी तक भी मुझे नहीं याद है कि मेरे को लगा हो कि मैं बोर हो रही हूं। आज आप किसी के साथ भी बैठ जाओ तो उनको लगता है बोर हो रही हूँ, और कुछ नहीं तो फिर हमको मोबाइल चले जाएगा, राइट? We never got bored, and till date I never get bored. If I'm alone also, I enjoy myself. So dear ones, we have to, what is today's practice? We have to think our past. Number one, today's practice is divided into three different time slots. One is the past. How did we feel about our health? How did we feel about our well-being? Then we have to, that is step one. Now, step two. Step 2, health you are continuing to receive, present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic words. Thank you for each one. Few days back, I met somebody and she said she's got frozen shoulder. Now, because of this frozen shoulder, she was hardly able to raise her hands. So, leave alone to make comb her hair, or she needed somebody to help her dress up also. Now, when we get into that stage, do you think so we have ever been in gratitude? So we will not forget that step one, when I'm talking about past, I will be in that gratitude mode, thank you mode. So now in the step two, when I'm doing for my present health also, I'm very healthy. I can walk, I can see, I'm talking about everybody, my dear ones. So we can walk, we can talk, we can move around, we can do so many things for ourselves. So there are people whose eyes are not there. There are people who cannot hear. So I will say thank you for each and everything, all of my organs today. That is my practice. First, I'll think about past, all the good health I had. For that, I'm grateful. I'll say thank you. Second, it's a present. So now everything is working so well. I'm in gratitude now also, thanking each and every organ of my body. Step 3. Step 3, health you want to receive, future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you are put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Yes. So that is our third thing. Again, dear ones, we have to see that what are our feelings. I'll give you one example. One day, we went to one puja, right? So the lady who was into that puja, जिसके घर पूजा थी, वो जो पूजा करवा रही थी, तो उनको याद आया कि इतने सारे मेहमान आए, ये चीज अभी आई नहीं है, तो वो पूजा करते करते then she would say, इसको फोन करके ये बुला लेना. Then she would still do it. Then she would remember something and then she would talk about it. What? अब आप कहेंगे पूजा तो उन्होंने बहुत अच्छी से करी थी. अब पूजा जब उन्होंने बहुत अच्छे से की थी, आपसे कोई जब बात कर रहा है,
तो आप कुछ बोल रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहा है, आप दो लोग बातें कर रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं। अब आप कहते कहते आप मेरे से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं पीछे देख के बोल रही हूँ और आप मेरे से बात करे जा रहे हैं, फिर मैं इधर देख रही हूँ, तो जब मैं पीछे देख रही हूँ तब आपको नजर आ रहा है कि आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। फिर हर थोड़ी देर में ऐसे होता है कि मैं पीछे देख के कुछ बोलती हूँ और आप बोले जा रहे हो। आपको क्या लगता है, आपका इंटरेस्ट रहेगा कि मैं आपके साथ थोड़ी देर और बात करूं? आप सोचो कि जल्दी से ही अब ये खत्म हो जाए तो मैं जाऊं। हम भगवान को तो छोड़ते नहीं है। So my dear ones, what are we talking? That when we don't, now we are talking about third step, that when we want to focus on our good health, means when I want to focus, for example, if somebody has some health issue, for example, somebody has got high cholesterol, and if somebody wants to heal that, now first of all, what do we do? Remember, I gave you that example. One of our relatives, at a very young age, he got heart attack. So whosoever came home or whosoever came to the hospital, so they would ask, "Arey, itni choti umar mein isko kaise ho gaya?" And then we would end up talking about that person. Aisa hua, aisa hua, aisa hua, aisa hua. That heart attack, if you allow me to use these words, that heart attack came more than 50 to 70 times. Why? जो आता हम उसको वो हार्ट अटैक डिस्क्राइब करा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, हम उस किस चीज को बुला रहे हैं बार बार? उस नेगेटिव थॉट को बुला रहे हैं। अब जब मुझे हील करना है उसको, तो फिर मैं जब उसको बार बार बुलाऊंगी तो जाएगा कैसे? I cannot push it also. So when I'm not able to push it, how will I heal myself? So the best way is, it is, a very common sentence that wherever your focus is, your energy will go. The energy doesn't know कि ये disease की बात कर रहे हैं कि good health की बात कर रहे हैं. So when I'm talking about that disease, not once, not twice, not thrice, umpteen number of times, I am calling it. My law of attraction would be very active here calling it. So now what are we supposed to do in the step 3? Today we will discuss, or we will think about, what do I want to heal in my body? And then I will not talk about it. As I told you, you can talk if you've gone to your doctor, that is altogether another story. But talking to normal people, everybody is not changing the situation at all. So we will focus not on the problem, but how it should be. So we are going to focus on that ideal state. If I'm talking about high cholesterol, what am I supposed to think? What is the normal cholesterol? I have to just talk about that. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. Yes, So, if some of us feel that I want to have the figure of Kareena Kapoor, so just visualize that. But then don't abuse your body. Usko nahi marne ka. You can always visualize. So if whatever good health you want now, whatever one problem we want to heal, we will give 1 minute to visualize of what? Visualization of the ideal state. What is the normal cholesterol? If a person who's got some heart problem, what would be the ideal state? That person was not born with that heart problem. That whole heart problem has now come into his life. So he was always very healthy. So that person would always think about that ideal state when he never had this kind of a problem. So that is what we are going to do. Spend one time visualizing the ideal state of our body, which we want, which was already. Yes, sir. So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore your health to your blood,
Be grateful for pure healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, father of Western medicine. Yes. You see, as I told you, there are natural forces inside our body which would induce healing. So we just have to be grateful for our good, whatever good health we have. If I want, and whatever I want to change, I have to just give gratitude to that, right? So please remember to do it. Today's practices, it is in 3 parts. Step 1 is I have to think about my health, which was in past, and I have to be happily in gratitude about that good health which I had in the past. Step 2 is I will think about my present health. When everything is good, all my hands, all my organs, everything is in perfect health, I will again be in gratitude, say thank you to each and every organ system of my body. Step 3, now I will think of one situation or one health issue which I want to heal. And I will not talk about it to anybody. I will just give gratitude to that particular health issue, what I have. Health issue I'm saying so that you understand what am I trying to say. And in that case, our natural forces inside our body will heal it. आप देखिए, बड़े से बड़ा ऑपरेशन जब होता है किसी का भी, उसके बाद भी तो हीलिंग होती है ना. तो हीलिंग कैसे होती है? बॉडी की अपनी कैपेबिलिटीज है हील करने के लिए. कितना भी बड़ा वुंड है, कितना भी बड़ा सूचर है, कितना भी बड़ा ओपनिंग है, यदि किसी वजह से रखा गया है, उसको बॉडी धीरे धीरे कैसे कर देती है. So just be in gratitude for that and see how it heals. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magic restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current status of your body, current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. Yes, we can do this practice multiple number of times in a day. And if we are again going into that negative of it, we have to visualize that good health and be in gratitude by saying thank you. Yes, sir. The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. Yes. एक कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है, पर बॉडी में 50 और चीजें हैं जो अच्छे से चल रही है. वही बात हमारी लाइफ की है कि हमारी लाइफ में एक चीज, 2 चीज, 3 चीज की कोई कमी है, तो हमारी सारी लाइफ उस चीज के ऊपर रिवॉल्व होती है. हमारी हैप्पीनेस, हम सबको हैप्पीनेस चाहिए. यहाँ पर जो भी है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हैप्पीनेस नहीं चाहिए, बेस्ट ऑफ जॉब्स नहीं चाहिए, बेस्ट ऑफ हेल्थ नहीं चाहिए, लॉट ऑफ मनी नहीं चाहिए. हम सबको चाहिए, राइट? बट उसके लिए हमको करना क्या है? जो ऑलरेडी चीजें हैं हमारे पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है. वहां से सारी मिरेकल स्टार्ट हो जाएगी चलना. Because gratitude is the human way of acknowledging हमारी लाइफ में क्या अच्छा है. तो हम जब
जब जब उसको एक्नॉलेज करते हैं, आप देखिए चीजें बढ़ रही हैं। अभी रोज कोई कुछ कुछ शेयर करता है, राइट? तो उस शेयरिंग में क्या चीज आ रही है? उस चीज में, ये शेयरिंग में ये आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। इंसान तो वही है जो पहले थे, जिंदगी वही है जो पहले थी, जॉब वही है जो अब पहले थी, घर भी वही है जो पहले था, रिलेशंस भी वही है, पर हम चीजें चेंज कर पा रहे, हम हमारे मन को थोड़ा सा डिफरेंट पा रहे, हम हमारी हेल्थ में चेंजेस पा रहे। तो ये सब किसकी करामत है? ये सब ग्रेटिट्यूड की वजह से है। पर करना है हमको, तो वो करेंगे हम कब? जब हमको नजर तो आए कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या है। आज आप किसी इंसान से जो बोलता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, और आप यदि उनसे बात करेंगे तो आप उनकी बातों में यही सुनेंगे कि वो इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं बहुत अच्छा चलती हूँ, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करती, वो ऐसा करती, मैं आई एम वेरी गुड फ्रॉम माई पार्ट। तो इस केस में क्या हुआ? आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपने अच्छा नहीं करा। जो कह रहा है कि मैंने ये अच्छा करा, आई एम नॉट सेइंग, इट्स जस्ट दैट द पर्सन हैज फॉरगॉटन टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट अदर्स आर आल्सो डूइंग। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप मेरे लिए 50 चीजें कर रहे हो और मेरी तो सारी 50 गड़बड़ है। नॉट पॉसिबल, नो। तो when we are not acknowledging those good things in our life, that is where all the problem starts. So for that, what is our practice? Magical practice number 16. Yes, sir. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. 3. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. 4. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during Sir, that please day. scroll to number 2. Yeah. So what are we supposed to do? Morning, we are going to write our gratitude list with 3 thank yous in it. Second, हमको करना क्या है? We have to recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world. ये हम past में जा रहे हैं. We will recollect 3 separate times throughout our life when we were top of the world. बहुत खुश थे हम किसी भी चीज के लिए. We have to write. ये हमारी प्रैक्टिस है कल की. ग्रेटिट्यूड लिस्ट को लिखने के बाद क्या है हमारी, कि हम 3 अलग अलग इंसिडेंट्स लिखेंगे जहां हमको अपनी पास्ट लाइफ में से, जहां हमको बहुत खुशी मिली थी, वी वर वेरी हैप्पी. उसके बाद मुझे क्या लिखना है? आई हैव टू थिंक अबाउट 5 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ माय बॉडी विच आर वेरी वेल. और क्या लिखना है मुझे? 5 फंक्शंस मेरे इस बॉडी के लिखने जो बहुत अच्छे चल रहे हैं. And we have to give thanks for each one of that. उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट हो गया. अब हमारे को स्टेप 3 जो बताया था, फ्यूचर. अब मुझे एक चीज चूज करनी है अपनी बॉडी की, हेल्थ की, which I want to improve. And then I have to spend 1 minute visualizing myself with that ideal state. आज किसी को नी की प्रॉब्लम है, तो उस बंदे को क्या करना है? उसको उस नी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, यानी हील करना है. तो उसके लिए उसको क्या करना है? उसको विजुअलाइज करना है फॉर 1 मिनट. एंड then we have to think about the ideal state when there was no knee problem and there was a perfect health. And then for that ideal state में वापस देख के we have to be thankful. ये हमारी कल की प्रैक्टिस है, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला जो उन्होंने बताया उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसी के ऊपर बेस्ड है. एंड बिफोर यू स्लीप टुनाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक एंड से थैंक यू. अब आप देखिए जो आपने ये चैप्टर पढ़ा, सर प्लीज आप स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर सकते हैं.
Now, when you have read this chapter, we are talking about physical health. We are talking about mental health. We are talking about our emotional health. All these different areas of our health which we are talking, we have got one single medicine to it, one single strategy to it, one single, you can say, a magic wand to it. That is gratitude. आप देखिए जब हम gratitude में होते हैं, आप खुद कर ही रहे हैं, आपको जब आप बता रहे हैं कि when we are in gratitude, serotonin is secreted, dopamine is secreted, these are healthy, happy hormones. जब हम खुश होते हैं, तो क्या उस वक्त हमें हमारी बॉडी के इश्यूज, हमारी बॉडी का डिजीज कुछ तंग करता है? बिल्कुल भी नहीं. आप देखिए, आप अपनी जब आप मूवी देखने जाते हैं, now when your mind is altogether at a different level there, because it is engrossed with something else. In the same way, when we are in gratitude, what is happening? Our energy is being focused at different areas, and therefore we feel very healthy. And then we say that we are attracting all these miracles in your body, you can say. So body itself is a miracle because it can heal itself. And we will just do this practice. I hope everybody is very clear about the practice which we are going to do it. My dear ones, please do it and see the difference in your health. Anybody would? Madhuji, excuse me, Madhuji, you're not audible. Are you able to? Are you able to hear me now? Yeah. In the point 2 that you said, recollect 3, instance when you were happy. Does it have to be related to health, or it can be anything? Anything? Okay, fine. You just have to see that you were very happy that time. आप मुझे कोई बता सकते हैं कि हम ये एक्सरसाइज जब हम वापस जा रहे हैं उसमें क्यों कर रहे हैं? We are talking about past. Why are we doing it? अभी तो बात तो वो है कि I want to heal a present issue. तो मैं पास्ट में जाके क्या कर रही हूँ? अभी मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, यदि सब लोग इस चीज को करने की कोशिश करेंगे, क्या चीज कि फॉर एग्जाम्पल कल की अपनी सैटरडे की बात कर लीजिए. हम सैटरडे को कह रहे थे कि हमें एक अपनी रिलेशनशिप को हील करते हैं, तो वो पास्ट में हुई थी ना, अभी थोड़ी हुई है. बट जब किसी को तो उस पास्ट में जाके अभी भी उनके मन के अंदर करवाहट आ रही है ना, क्योंकि वो आपको छोटी सी चीज सोचोगे तो वो चीज नहीं आप महसूस कर सकते हो. जिसके साथ कुछ बड़ा चीज हुआ होगा वो उसको बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा है, तो वो भी तो पास्ट में है ना, तो हम पास्ट भूलते नहीं है. So when I'm talking about, or when we are talking about those 3 incidents which were in past and we were top of the world, आप बहुत खुश हुए थे, तो कर क्या रहे आप उस फीलिंग को, we are trying to relive that, right? जो नेगेटिव फीलिंग में भी तो बार बार जाके याद आते ना, उसने ऐसे कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा करता, तो वो मोमेंट तो खत्म हो गया, बट वी रीलिव दैट मोमेंट अगेन एंड अगेन. सो हियर आल्सो वही कंसेप्ट है, आप उस खुशी को बार बार जाके. गुड मधु जी, थैंक यू सो मच. एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर शेयरिंग? कुछ और शेयर करना चाहेंगे? What was good for you in today's? क्या पॉइंट अच्छा लगा आज आपको आज के सेशन में? What would you take away with you? Anybody? Okay. Yes, Mataji. Yeah. I think I'm already imagining that whatever health problem is going to get resolved. Wonderful. So I already started imagining it. Wonderful. Okay. Yeah. Dear ones, I have to share with you tomorrow. I would not be able to take this session because tomorrow I'm traveling and my train is at 8:30. So would be in train, so will not be able to have the session. So would continue day after. Yes, somebody was saying something.
मैम ये जैसे जो आज टॉपिक हुआ है, हाँ। तो ये पहले भी एक बार आपने इसके बारे में बोला था ना, आई लव माई बॉडी एंड आई लव माई आप देखिए, आई। यस, मैंने आपको क्या कहा था उस वक्त भी अपने, मैं आपको आज भी, आपने शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया सुषमा जी, हाँ जी, जो हमने पहली 12 वाली जो प्रैक्टिसेस थी हमारी, उसमें हाँ। हमारे पास जो है ना, हम हम्म, उसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, क्योंकि हाँ। हम ग्रैटिट्यूड देना सीख रहे हैं। ठीक है, अब 13 डे 13 से लेकर अब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे मीन्स उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको ग्रैटिट्यूड तो हमने सीख लिया। ओके ओके। जैसे जो इतनी सारी प्रैक्टिसेस थी ना कि आज ये करिए, आज ये करिए, उन प्रैक्टिसेस के साथ अब हमने ग्रैटिट्यूड करना तो सीख लिया। अब उस सीखे हुए ग्रैटिट्यूड से हम अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? हम बोलते हैं ना ग्रैटिट्यूड करिए अबंडेंस आएगा, ग्रैटिट्यूड करिए गुड हेल्थ आएगी, जॉब अच्छा होएगा, तो वो हम अट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। ओके। तो ये उससे रिलेटेड है। आएंगे सब यही मैम, आपकी हेल्थ होगी, आपकी रिलेशनशिप्स होंगे। आपने रिलेशनशिप पहले भी पढ़ा, यस मैम, आपने रिलेशनशिप सैटरडे को भी पढ़ा, यस पर मैम। अब इस वाले रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन था। उसके पिछले वाले रिलेशनशिप में उस जो चीज है उसको ग्रैटिट्यूड करके देखना था। अब की बार आपको उसको अट्रैक्ट करके चेंज करना है। एबंडेंस भी तो अट्रैक्ट ही करना है ना, यस, राइट? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी मिस, अभी जैसे आप कह रहे थे कि पास्ट 12 टॉपिक पे तो ग्रेटिट्यूड करना है, तो अभी हैबिट ही हो गई है। जैसे Very good. उठते हैं सुबह तो हाँ, जैसे आंख खुलती है बेड में ही है, सीधे हाथ जोड़ के थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे उठाया, यू वोक मी अप। एंड very good. जमीन पे पैर रखते हैं तो पहले उसे टच करते हैं, थैंक यू। एंड देन प्रे, छोटी सी प्रे होती है 1 मिनट की, वो करके स्ट्रेट अवे आई हग टू माय बॉडी एंड से आई Very लव good. माय बॉडी। सो अभी Yes. ये हैबिट हो गई है कि हाँ, इट इज, एंड very अच्छा nice. लगता है। एंड एज यू हाँ, सेड के आस्क यूनिवर्स के व्हाट मैजिक प्लान यू हैव गॉट मी फॉर टुडे। तो yes. ये सारा मतलब अभी जैसे कहते हैं ना कि एक नस में घुस गया है कि बस ये तो करना ही है। ब्रश नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन ये पहले करना है। Very good. वही Wonderful. तो मैम, ये चीज मैंने भी नोट करी है। पहले मैं भी टच करती थी, हाथों को देख के फेस पे लगाना ये करती थी, लेकिन कभी कभी भूल जाती थी, That's इतना okay. बॉदर नहीं करती थी। लेकिन ये क्लास में सेशन में आने के बाद मैम, अपने को मुझे बालकनी में जाना है, मुझे बर्ड्स की साउंड सुननी है, चार्मिंग, मुझे फ्लावर्स देखने हैं। मैम आजकल तो मुझे पीकॉक की भी सुनाई दे रही है। Wow. वाह। वो पहले भी थी, राइट सुषमा जी? वो पहले भी थी, लेकिन जी हमने कभी जी। ध्यान नहीं दिया नहीं था, दिया था। लेकिन और मैम मैंने पीकॉक की वीडियो भी बनाई है, मुझे वो भी दिखा है। वाह। देखिए साहब, अपन को करना है, बस करेंगे तो चीजें बदल जाती हैं, बिल्कुल जी। बदल जाती हैं। एंड थैंक्स टू यू बोथ के यू हैव गाइडेड अस। You यस, have taken it. That is also very important, no sir? जी 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 मिस, हाँ, थैंक यू मिस। चलो. So tomorrow, please excuse me since I'm traveling. So we'll take my next session on Wednesday. Right, dear ones? Wednesday, I'll of course post it in the group so that because you all forget, so it would be a reminder. So thank you so much, dear ones. थैंक See यू you मैम, again. थैंक यू थैंक एंड थैंक यू हैप्पी थैंक यू जर्नी मिस। मैम। Thank you. थैंक Thank यू। you so